मेरा नाम जगबीर सिंह, 51 साल की उम्र थी मेरी जब उस टाइम मेरे को शुगर हो गया। मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता था, मतलब कुछ भी करने को मन नहीं करता था। तभी मैं डॉक्टर के पास गया, चेक कराया तो शुगर मिला तो डॉक्टर ने दवाई चालू कर दी। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने गांव के 2-4 आदमियों को भी बताया भी मेरे को शुगर हो गया, तो उन्होंने बताया, बोला गाँव में शुगर तो बहुत आदमियों को है। India is the most populated country in the world. India is catching up to be the diabetes capital of the world. And Jagbir from Sonipat in Haryana is one of the many with diabetes in the country. His concern is ironical considering the numbers. Insufficient health workers is one of the biggest challenges in managing non-communicable diseases like diabetes, hypertension and cancer. To add on, we as communities also lack motivation to take charge of our health. But can we turn this around at its feet and make the community itself contribute to the solution of the problem by creating psycho-socially enabling environment? We in Sonipat, Haryana and Vishakhapatnam, Andhra Pradesh did just that. At the very root, community level, we created non-communicable diseases, peer-to-peer support groups that encouraged self-care, self-management and treatment adherence by providing psychosocial support and relevant education. People could now fill in the gaps that medicine, treatment and health facilities could not fill by learning behavior change from each other, getting inspired from one another and staying motivated through support from and within the community. We applied the positive deviant approach, an approach that makes all individuals who are part of the problem also a part of the solution. This is exactly how Jagbir was identified. PD selection tools were applied for 2 levels of screening. First level included PD selection criteria, potential patients who have controlled medical parameters like blood pressure, blood sugar, weight, etc. And second level included PD inquiry that helped in identifying PD with unique or desirable health behaviors and screening their behaviors. Jagbir was someone who successfully navigated his problems despite facing similar challenges as the other villagers around him. He was a positive deviant or a lok shikshak. हमारा 10 आदमियों का ग्रुप है। हम सुबह शाम पार्क में जाते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। एक दूसरे को समझाता है, बताता है, हेल्प करता है, तो उससे जो है ना सभी आदमी मतलब बहुत बढ़िया ढंग से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया हमने। पूरे गांव के लोग हमें लोक शिक्षक बुलाते हैं। Lok Shikshaks like Jagbir hold meetings regularly with their peer group. They share their personal experiences, set one goal on healthy behavior, follow up on previous goal, discuss challenges faced in following the healthy behavior, address these challenges, and appreciate those who achieved and sustained the healthy behavior goals. This approach has proved to be helpful in keeping the groups self-motivated with very little external stimulation. हमारे गांव में शुगर और बीपी की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैंने और मेरे गांव वालों ने फैसला लिया कि भी कहीं पार्क बनाया जाए। तो हमारे गांव में रेस्ट हाउस है, वहाँ पे हमने लेवल करवाया ज़मीन पे और वहाँ पे पार्क बनवाया। पार्क बनने के बाद वहाँ पे लेडीजें जाने लगी और वो भी अपने ग्रुप बना रही है, एक दूसरे को समझाती हैं। पार्क के अंदर जाने के बाद मतलब एक दूसरा समझाता है, एक्सरसाइज करवाता है, तो एक दूसरे की मदद करके और बहुत बढ़िया ढंग से आज जो है ना हमारे गाँव में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, शुगर और बीपी पे। टीम आई गांव में, जब उन्हें चेकअप कराया था, मेरा चेकअप करे बाद फिर उन्हें समझाई, ताई आपको शुगर है। मैं कहा ठीक है बेटे, फिर क्या करना चाहिए शुगर का? चिकनाई कम खाओ,
मीठा कम खाओ, तली पड़ी चीज़ कम खाओ। जब मैंने परहेज कराया है मैंने उसका आराम दिखाई देगा। शुगर के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, जिससे मैं योगा भी करता हूँ और सुबह सैर के लिए भी जाता हूँ। थोड़ी वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आगे कल हमारे भी कोई बीमारी ना हो, इससे हम स्वस्थ रहें। एक्सरसाइज करें थोड़ा ये और लंबे लेट कर वो कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज करें। मैं पहले 3 गोली खाता था, करीब सजे 1 गोली पा रहा हूँ। This impact is clear in the numbers too. Of the 300 patients interviewed, 57% reported they were physically active on a regular basis. 87% reported to have taken their medicines regularly and on time as advised by their doctor. 87% reported regular monitoring of their blood glucose and blood pressure levels at least once a month. 51% reported that they were monthly visiting their doctor. 95% patients reported improvement in blood sugar and blood pressure levels. PPSGs have now been provided with low-cost short films featuring Lok Shikshaks on healthy eating, physical activities and foot care that are screened at the meetings to reiterate the message and continue building a healthier community. But this is not the end of the road. The government has now started engaging community health workers to initiate and support PPSGs as facilitators. To strengthen the future effectiveness of PPSGs, linking support groups with local health facilities and health service providers like doctors, community health workers, insurance schemes, etc., linkages can be explored. हमारी इच्छा यही है कि भी हर अपने जो मेंबर है उसको शिक्षक बनाया जाए और वो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। The fact that people like Jagbir, Rampath, Shanti have found an answer to their problems within their own community, found the ray of hope within their own little world, is testimony to the fact that if we really do look deep within, we shall always find an answer. Be the change you want to see around you. Together, we can do so much.